वाह, सीख गई तू, फाइनली सीख गई तू। एक्सट्रीम डाइवोर्स पे पहुंच गया ये। Hey guys, welcome back to another No Filter Thursday. आज हो चुके हैं Wednesday रात. We are very late for this video, but ये video तो आज बननी ही थी. And the topic of the video was कि what kind of you can ask any question about the hardships that you are facing, or you want to some insights from us कि हमने कैसे manage किया था. So we'll start with the first question. शुरू करें? Yes, let's get started. So the first question is single room नहीं मिल रहा है and there are rental issues. So definitely there are massive issues in rental. Kijiji marketplace के अलावा और कहीं मिलता नहीं है. So I would recommend finding people who you can share the rental space with. You can make your friends up. Obviously, I think you are already here, so it's a little bit too late. But जो लोग आ रहे हैं नए अभी, वो पहले ही ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर ऑलरेडी नेटवर्क करना शुरू कर दो फेसबुक ग्रुप्स में. सी इफ यू कैन पार्टनर अप विद 2 or 3 पीपल एंड 2-3 लोग मिलकर, इट विल बी अ लॉट बेटर एंड ईजियर. कॉलेज जैसे आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो कॉलेज के ग्रुप्स बने होंगे, उस कॉलेज के अंदर आपको थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे, तो 3-4 लोग मिलकर अगर ले लोगे तो इट विल बी अ लॉट बेटर. Obviously I can't solve a problem for someone who is already here because we are also facing the same problems. सिमरन की सिस्टर को भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी, बट आई थिंक जो लोग अभी नहीं आए हैं और आने वाले हैं, मेक श्योर दैट यू आर नेटवर्किंग इन दोज ग्रुप्स. Absolutely. Next question. Leaving a good job from back home and starting afresh as a student. ये तो बहुत डिफिकल्ट था. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट आई डिड, नॉट एज अ स्टूडेंट. मैं तो एज अ पीआर आया था और उसके बाद भी आई टुक अ जॉब व्हिच वाज 2 levels लोअर, एंड दैट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई डिड कमिंग हियर. अपार्ट फ्रॉम पैंडेमिक में आए थे, वो सब जो था वो तो सबके साथ ही था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनली ये मेरे को लगा था. बट एज अ स्टूडेंट स्टार्टिंग अफ्रेश, जस्ट टेक इट एज अ लाइफ टर्न होते ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. जैसे हमारी भी 3 साल में, वी कांट बिलीव कि हम 3 साल पहले आए थे और इतना ज़्यादा टर्न अराउंड हो गया है. यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग इट एंड जस्ट गो विद द फ्लो. एंड दिस इज समथिंग दैट सिमरन सिस्टर विल बी एबल टू आंसर अ लॉट बेटर बिकॉज शी केम आफ्टर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस एंड एज अ स्टूडेंट, एंड शी इज लाइकिंग इट बिकॉज शी इज जस्ट टेकिंग इट इन हर स्ट्राइड. ठीक है, सब कुछ लेट है, सब कुछ डिलेड है, सब कुछ है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही होगी, बट इट्स फाइन. लाइफ इतनी लंबी है, अभी 40-50 साल और जीना है. So, क्या फर्क पड़ता है 2 साल अगर थोड़ा पीछे चले भी गए तो. For sure, and I always feel eyes on the prize. जिस चीज के लिए आप आए हो यहाँ पे as a student लेकर, just work towards that and think that's your main goal. Work-life balance. Okay, work-life balance. It's very difficult to get that. अगर आपका workplace supportive है, then it will be amazing. But if your workplace is not supportive, I would highly suggest कि you talk to your HR there, या फिर you try to find a better job. Because यार हम कनाडा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, उसके बाद भी वर्क लाइफ बैलेंस के अगर हम लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, it doesn't make sense. Just change your job. Honestly, if something is not making you happy, or it's taking happiness away from you, just change it, right? Yeah. So it's that simple. Away from friends and family, again related, right? हम सारे friends, family सब कुछ छोड़कर आए हैं यहाँ पे. कलीग्स से जितना नेटवर्क करोगे उतना अच्छा है. द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नेटवर्क विद मोर पीपल एंड फाइंड फ्रेंड्स हियर. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप किसी को नहीं जानते यहाँ पे आने के बाद, बट मेक एन एफर्ट, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स, बिकॉज दैट वुड जस्ट टर्न अराउंड द वे यू आर लुकिंग एट कैनेडा. अगर फ्रेंड्स होते हैं ना, तो जितनी भी कोई ट्रबल होती है ना, इट जस्ट गोज अवे. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स दैट वी हैड when we came here. My long term friend मेरे बचपन की was here, and that was a big help, and I would highly recommend, and that's why we do all the networking events. Networking events पे when you meet new people, other people who don't know other people, who don't know anyone, you just become more connected. एंड कितने सारे लोगों ने हमें कहा है कि हमारे फ्रेंड्स बन गए, फिर हम चाय पे पीने गए. सो ये बहुत ज्यादा हुआ है हमारे नेटवर्किंग इवेंट. सो मेक श्योर यू आर मेकिंग Yes, and I know for a fact networking event where there were 2 couples, and like the guy and the female, they used to work together in the same office in Delhi, and they didn't know that they were here in Canada. So this is so amazing. They connected, and एक वो मिल गया कि हाँ ठीक है, we have people now that we know of. Yeah. So तभी हम नेटवर्क, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्किंग इवेंट से पोटैटो टॉकीज कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहे. The reason why we are doing, in fact,
जितना काम होता है और वो होता है, we actually lose money in doing that. But the reason is this, because we want to give a platform. जब तक हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं, we just want to give a platform for people to connect with one another, and we are getting so many success stories there. Yes, absolutely. Next one, managing house chores. Managing house chores. अब बहुत मुश्किल है, because for us also it was very difficult. I think मेरी सबसे बड़ी responsibility वो थी, because हांगकांग में और इंडिया में we always had help. मतलब घर पे थे तो mom dad were there to help with house, घर के काम वाम. So वो was the biggest challenge, and Navjot stepped up. He said if I am making food, he'll clean up. If he's doing the cleaning and everything, I'll do laundry. So I highly suggest couples कि यार please अपना काम divide करो. It's not just one person's job. Like either way, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी एक को नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए. Just divide your house. And अगर अकेले आ रहे हो तो honestly कुछ कर नहीं सकते. अच्छे friends अगर होंगे आसपास तो they'll just divide house chores. जैसे मेरे जो cousin हैं वो इकट्ठे 4-5 लोग रहते हैं. कोई कपड़े कर रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, कोई अलग-अलग responsibilities ले रखी हैं. Eventually ठीक हो जाता है. पहले 6 महीने थोड़ा सा लगेगा. It's a culture shock as well. It's a change in सब कुछ खुद लेने जाना है, ग्रोसरी करने जाना है, गाड़ी नहीं है, बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, right? So it's all good. 6-7 महीने 8 महीने hardship होएगी, and then it'll all And I also feel इसका the good outcome is कि ना planning एकदम point on हो जाती है. Now I know कि मेरे घर में कितनी grocery है, कितना नहीं है, and I know for a fact कि मैं अगर Walmart का order ऊपर बैठे करूंगी तो I can just place it without even seeing my fridge कि what is there or not. हाँ, you actually get better with time. 3 साल हो गए अब, सिमरन तो एकदम एक्सपर्ट हो चुकी है. Questioning purpose of move after facing hardships and failures, and this is a big one, and this is something that we would be lying if we say that हमने ये नहीं सोचा था शुरू में जब हम आए थे. और ये बहुत नॉर्मल फीलिंग आती है पहले 6 महीने 1 साल तक कि हमने सही करा कि नहीं करा. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक तरफ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम कनाडा आए थे ना, इनफैक्ट कोविड आया, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, सिमरन को जो जॉब मिली थी पहले वो बहुत कम थी. $20 an hour फॉर अ डेवलपर इज वेरी लेस, राइट? सो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे शुरू में कि यार सही करा नहीं करा. उस टाइम पे कोविड भी था, बट वी न्यू वन थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग बैक. एंड हमने एक तरफ पैर रखे हुए थे, हमने दोनों तरफ पैर ही नहीं रखे हुए थे. एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग. जस्ट गो ऑल इन. If you have come here and if you are convinced that this is the life that you want, and then अपने आप रास्ते बनते रहेंगे. हमारे लिए तो बने थे, and I'm really hoping that they do for. Yeah. हम लोग जब आए थे ना तो we met someone who said that, जैसे जो like कैब में बात कर रहे थे, he said that जब आप कनाडा आते हो तो आपके 2-3 साल या 3-4 साल पहले के बहुत डिफिकल्ट होते, बट लाइफ तो आगे 50 साल की तो है ना कम से कम. तो उसमें अगर 3-4 साल थोड़े मुश्किल भी निकल गए, थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई, तो कोई बात नहीं, आगे के 40 साल तो वो विल बी वेरी गुड. एब्सोल्युटली. सो वो थॉट प्रोसेस से हम हमेशा सोचते हैं कि जो उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि कोई बात नहीं. उन्होंने टैक्सी चलाई थी पहले 4 साल, राइट? बिकॉज ही वांटेड टू बी अ रियल्टर एंड नो ऑल द स्ट्रीट्स. सो आई थिंक वो बात बहुत ज्यादा हमें इट स्टेड विद अस. बट या दैट्स व्हाट इट इज, राइट? सो 1 year to 2 years तो सोचो मत ज्यादा, राइट? जस्ट give yourself the chance to just do better, and you'll be fine. इससे एक related question है, comparing your lives with other successful people. Don't just compare your life with yourself. कोई फर्क नहीं पड़ता परेड ऑफिस ने कितने घर खरीदे, फलाने बंदे ने क्या कर दिया, इन्होंने पहले घर खरीद लिया, इनकी सैलरी ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? It will not change anything for you. It will just make you more depressed. And that's something that is not very healthy. And I would highly recommend not comparing yourself with anyone, because your situation is your situation. We don't have kids. You have kids, right? So you can't spend the amount of time that we do in making all these videos at 10 p.m. at night, right? So I think that's where things can be different, and so don't compare. Not able to find a job as I can't, not able to do a job as I can't leave my 1-year-old. No work from home jobs. Learn social media, learn editing, and then reach out to people, realtors, mortgage agents who are putting out videos, and help them do the subtitling, editing of their reels, all that, right? So I think that's the best work from home job that doesn't require you experience. It just requires skill that you can learn. So definitely anyone who is in this situation, I would highly recommend to learn some social media skills, and you'll be okay. Okay, next one, how to cope with loneliness. Again, networking events, meet people, make friends, make a conscious effort. अगर
normal नहीं भी है आपके लिए, it doesn't come naturally, it doesn't matter. Otherwise you'll keep feeling lonely, you'll keep feeling depressed. So make sure that you are going out there, because there are more people who are alone. And क्यों दो लोग alone हैं, तो मिल जाओ ना फिर. मैं ये नहीं बोला शादी कर लो, right? But be party करो. Just go to networking events every chance you get. Next one, getting interviews but not getting selected. I would like to say something here. जैसे for example, if I'm going for a job which I really like but I really want to get selected, but हो सकता है ना हो selection. So when I'm having that initial conversation with the interviewee, I tell him, see, even if I'm not selected, I would like to get feedback, because ऐसा अगर 2-3 बार हो चुका होता, there's something that you're missing. So ask for that feedback even before you start. तो बंदे को भी लगता है कि हाँ, this बंदा wants to learn and grow. This is basically putting yourself, कि yes, I am here to learn, and if I don't get it, do give me feedback. So that's important. Good answer. We are a couple, we are very stressed about buying a house and we don't have PR. Don't compare with other people, number 1. Number 2, अगर PR नहीं है तो घर खरीद नहीं सकते because foreign buyer ban है. So don't stress about things that you can't change right now. There's no point, right? Market जा रही है, बढ़ रही है, नहीं खरीद सकते घर, उस पे stress लेके क्या फायदा? So never try to control things that are not in your control, and don't stress about that because you can't do anything about that. बल्कि slow ही होगा सारा process. अगर आप ज़्यादा stress करोगे, so don't do all that. I want to add something here. Life में ना एक बार ऐसा instance आया था कि things were not out of my control, and नजोत ने मुझे एक बात बोली थी कि तू उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करे जो तू नहीं कर सकती है. सो ट्राई एंड फोकसिंग एंड पुटिंग योर एनर्जी टुवर्ड्स समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल. फॉर एग्जांपल, हमारे सिनारियो में जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट? अब आई कीप थिंकिंग अबाउट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है. द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इज वर्किंग मोर एंड गेटिंग मोर मनी इन. सो आई विल फोकस माई एनर्जी, माई इंटेंशंस टुवर्ड्स दैट, एंड नॉट की गवर्नमेंट क्या कर रही है. अब नहीं कर सकते इसमें कुछ भी. वाह, सीख गई तू, फाइनली सीख गई तू. Okay, next question. What if we want to plan baby in our first year? Look, so you can do that. You just need to know and understand that you need to plan, a little bit more, because जब baby करते हो तो it's not like zero हो जाती है income, but you just get EI. And EI जो होती है वो $2,000 पे capped होती है depending on how much you have worked. So you just need to make sure that your expenses are not exceeding, or you're not exhausting all the money that you are getting right now, because income will be reduced for a couple of years, right? So I think that's the only thing. Plus daycares होते हैं सब कुछ. Just make sure that you are making a financial plan, and definitely I'm not saying that you should have a baby or not have a baby depending on the money that you are getting in, but just have a plan so that the entire experience becomes a little bit better. Next question, it's a good question. When does it get better? So basically the person is saying that it's been 6 months and things are just... I think 6 months is not a very good interval to look at. I think you need to look at 2 years, because पूरी life change हो गई, right? India से यहाँ पे पूरी life बदल चुकी है हमारी. It's almost like rebirth for us after 30. Hard reset हुआ है. So it's okay. 2 years is not... Like 2 years is nothing compared to the next 40 years, like Simran said earlier, that you are gonna build your life. So it's nothing. It's just 5% of your remaining life. So yeah, it's just foundational years, and don't worry about it. Just keep doing what you're doing, and just keep afloat. डूबना नहीं है, right? So keep afloat, and after 2 years you'll just feel fine. Next one. How did you stop comparing with your life in India? एक तरफ पैर कर लिए थे, ठीक है. आई टुक अ पे कट. सिमरन का भी थोड़ा सा कम हुआ था, फिर शी गॉट अ गुड जॉब, बट वी जस्ट न्यू दैट वी हैव टू मेक इट हैपन, एंड गोइंग बैक वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. इट्स नॉट लाइक कुछ खराब था इंडिया में. इट वॉज जस्ट दैट अगर एक डिसीजन ले लिया तो हमें लगा था कि नहीं, हमें ऑल इन जाना है इस वाले डिसीजन पे, एंड दैट्स व्हाई वी नेवर कंपेयर्ड. ऑनेस्टली वी नेवर कंपेयर्ड. Yeah, we did not. So there were good things and bad things that were happening when we came here, but we still never compared because we knew that this is it. What motivated you to keep working after regular work hours? Okay, initially the motivation was कि that I'll be honest, जो YouTube पे 10K, 20K, 30K वाले जो numbers थे, that was the initial motivation. If you ask me right now, I just like it, and the love and affection that we get from you, we are so grateful for it, that just wants us to do more and more. Ki, like just say for example Avjot's FJ, right? Like I know we are only able to reach out to like a few people, but
we want to work on something ki we are able to reach out to more students as well. So we know that, you know, we can help a little more people, so that's the kind of motivation right now. I think it's the response that we got from a lot of people that we meet, and that just keeps us going, and plus it's just making a difference, right? अब लोगों को लग रहा हो कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, but honestly we want to make a difference. हमने 100K वाली वीडियो में around 1.5 साल पहले भी ये कहा था, that everything that we do from that point on, which is we are doing right now, is to help help immigrants, you know, live a better life, right? So I don't know how much we are able to do that or how much we'll do it in future, but that is always the motivation. People are failing in relationships in Canada as compared to India. Why? मेरे को ऐसे लगता है कि when a couple is here, जो external noise या external factors होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, and then it's just two people who realize यार सब कुछ सही नहीं है. And I think that's the point where the couple should talk to each other कि you know कहाँ work करना है relationship पे, क्या नहीं करना है. And if nothing seems to be working out, I guess it's better for their happiness to step away from each other. So this is my take. Extreme divorce पे पहुंच गई है ये, but obviously like he's saying, discussion is the first thing, यार. Come on. Yeah, I think anyways, कुछ नहीं, छोड़. That's all we have for today. थोड़े से और questions थे जो finance related थे, जो हमने Grow with Nav पे काफी ज़्यादा आंसर करे हुए हैं. So do follow me on Grow with Nav, Instagram as well as YouTube, and do follow us here as well for all these No Filter Thursdays. And इसी week से हमारी interview series भी शुरू होने वाली है, जिसके अंदर we are interviewing you know different people like students, like immigrants, अलग-अलग professions के अंदर. So it will be very exciting journey. So do subscribe to this channel because we will be talking about more and more people and more success stories and not so success stories, but all the experiences that a lot of people have when they come here. I hope you find that relatable. That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye.